Parul, अभी आप host हो. The meeting is being live streamed on YouTube. ठीक है? ठीक है. अभी मैं निकल रही हूँ. Sorry, I'm so sorry for giving you like this. ठीक है? Take care, Parul. Bye. Thank you very much, Brinda ji. Hello, Shilpa ji. Can you hear us well? जी बिल्कुल, हम आपको सुन सकते हैं. Okay, sure. थैंक यू वेरी मच शिल्पा जी, आपके आने के लिए. थैंक यू सर. मैं सबको एडमिट कर ले रही हूँ एंड देन मीटिंग स्टार्ट करते हैं हम. हेलो रेखा माँ. Hi, Parul. हाय रेखा Good माँ. evening. I Good just evening. managed to get some connectivity. I'm sitting on the terrace. थैंक यू वेरी मच माँ. No, it's still raining very heavily, so the storm hasn't crossed. So, रेखा माँ, शिल्पा जी हमारे साथ हैं.
जो आज ट्रस्ट डीड के बारे में हमें बताने वाले हैं। Hi, Shilpa. Thank you so much for being a part of the whole thing. And honestly, it's been a delight to hear so much about you. Have I lost you? हेलो शिल्पा जी। I can't see her. यस यस, मुझे लग रहा है उनका कनेक्शन थोड़ा सा, हम वेट करते हैं। Actually, there's some. Hi, Shilpa. Looks like you're having a storm in your area. It's not like storm here, ma. But yes, Exactly. आपकी आवाज कट के आ रही है शिल्पा जी। Your voice is broken. Yeah. Hi, Shilpa. Can you hear me now? I think they're having an issue. Yes, yes. So, Parul, tell us a little bit about what Shilpa is going to offer. Yes. सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्ते। डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया के शनिवार के सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर अलग अलग टॉपिक पे आके आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हम जिन भी अपने गेस्ट को बुलाते हैं यहाँ पे, वो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी डिसीजन जब आप लेंगे तो वो आप अपने विवेक से लेंगे, अपनी सुविधाओं के हिसाब से लेंगे, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से लेंगे। डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया कभी भी किसी भी चीज के लिए आपको फोर्स नहीं करता है। हम आपको अच्छी से अच्छी सुविधाएं देने में और अच्छी से अच्छी जानकारी देने में यकीन रखते हैं, जिसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। उसके बाद जो जानकारियां हैं उनमें आपको कितना इन्वेस्ट करना है, कितना उनमें डीप में जाना है, क्या क्या आपके लिए, क्योंकि हर एक चीज हर किसी के लिए नहीं होती है, ये भी हम जानते हैं। तो आपको अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार उन सब चीजों को चुनना होगा। हमारी तरफ से किसी भी चीज का, आप जानते हैं, कभी भी कोई दबाव नहीं होता है। डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया अपने आप में एक एंटिटी है जो अपनी बातें जब रखती है तो अपने फोरम पे रखती है। हमारे थ्रू कोई भी इस तरह की कोई चीज नहीं है कि कोई फोर्स आपके लिए नहीं होता है। हाँ, हम जिन गेस्ट को बुला के लाते हैं, जिस भी टॉपिक पे आपको जानकारी देते हैं, उस पे आप जो भी सवाल चाहें हमारे गेस्ट से और हमसे पूछ सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी देने की हम जैसा कि रेखा माँ का हमेशा से ही रहता है कि हमेशा अपने पेरेंट्स को अवेयर करना और उन्हें सक्षम बनाना ही हमारा ध्येय है। धन्यवाद। शिल्पा, Hi, आप Shilpa, can you hear me now? Shilpa? शिल्पा जी, आप प्लीज किसी दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर लीजिए हमें। सो रेखा मैम और पारुल जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? आई होप जी, आवाज बिल्कुल आ रही है। मैं एक बार फिर से रीज्वाइन करता हूँ आपको। जी, रीज्वाइन कर लीजिए या फिर 2 डिवाइस से आप आ जाइए। So, Parul, the whole thing is about a trust fund, or Yes. is it a trust, or I don't understand what it is. इट Is इज यस माँ, ये एक ट्रस्ट डीड के बारे में हम बात करेंगे। ट्रस्ट डीड जो है वो एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन है अपनी जरूरतों के हिसाब से। जब हम ट्रस्ट बनाते हैं तो हर एक फैमिली की अलग अलग जरूरत होती है और अलग अलग परिस्थिति होती है, तो उसको कंसीडर करते हुए आपके लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, आप अपनी सुविधाओं के अनुसार जो डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, वो एक ट्रस्ट डीड होता है, जितना कि मैं समझती हूँ। इस पे आगे की जानकारी के लिए हम शिल्पा मैम की तरफ चलते हैं। शिल्पा जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शिल्पा जी जब तक आती मैं बता दूं, शिल्पा सिंघल जो है वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं जो नोएडा में है, एंड वो 6+ ईयर्स का उनको एक्सपीरियंस है, पोस्ट क्वालिफिकेशन है उनका इसमें, एंड वो एक लॉयर भी हैं, कॉर्पोरेट लॉयर हैं, और इसकी भी वो प्रैक्टिस करती हैं ट्रस्ट डीड एंड इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन में। वो कई सालों से लोगों की हेल्प कर रही हैं। शिल्पा, ये पारुल, ये नोएडा में सारे के सारे ऐसे ब्यूटीफुल यंग वेरी यस एक्चुअली नोएडा में कुछ ऐसी एनर्जी है जो अट्रैक्ट करती है इस तरह के क्या हम आ जाए नोएडा में? बिल्कुल, प्लीज माँ, आप आ जाएंगी तो बस फिर तो पूरा जहां हमारा हो जाएगा। नहीं, ऐसे because Shilpa looks so young and so vibrant, and I can't believe that she is already a company secretary, and
she's practicing trust deeds for all of us, and I think we should और take एक और बात advantage मैं of the आपको बताती knowledge. हूँ माँ, That is what I always say. शिल्पा, अभी एक और बात मैं आपको बताती हूँ। शिल्पा का 17 इयर्स का बेटा है जो डाउन सिंड्रोम ब्लेस्ड है, जिसके लिए उन्होंने ऑलरेडी अपना ट्रस्ट डीड बना रखा है। Acha. Yeah, Good. Parul ma'am, So, can you so have- I want to know how it जी works. शिल्पा जी, जी शिल्पा जी, हम जी, सीधे आपके पास आते हैं। अब हम आपको सुन पा रहे हैं, मैंने आपका इंट्रोडक्शन दे दिया। आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो शिल्पा जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ट्रस्ट डीड थैंक यू है मैडम। क्या? हाँ जी, बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर योर पेशेंस टुडे। मेरे इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग। सो जैसे कि पारुल मैम ने मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड से हेलो टू एवरीवन। आई एम शिल्पा सिंघल, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉर्पोरेट लॉयर. I have 7 years of experience, and with me is my husband, Mr. Piyush Shingal. So we are also parents, Parul ma'am has already told, we are also parents to a special child who is 17 years old. So basically आज हम बात करेंगे ट्रस्ट डीड के बारे में कि क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ये हमारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो मोस्टली क्वेरीज हमारे मन में आ रहा है कि ये ट्रस्ट है क्या, आखिर ट्रस्ट डीड क्या है, ट्रस्ट क्या है, उस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। So सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू थैंक यू डाउन सिंड्रोम फेडरेशन इंडिया, मैम एंड पारुल जी। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बीच में थोड़ी सी आपकी आवाज क्रैक हो रहा था। I think there's okay. I hope इंटरनेट कनेक्शन कुछ बेटर हो जाए कमिंग। मैंने अपना वीडियो ऑफ कर दिया है सो दैट आप सब लोग मेरी आवाज सुन पाएं। जब हाँ तक जी, अब ठीक शायद पा अच्छा रहा है। रहेगा जी। सो बीइंग पेरेंट्स, हम लोग अपने बच्चों के लिए काफी कुछ प्लान करते हैं, और स्पेशली जब हम एक स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट्स होते हैं तो मोस्टली हमें ये चिंता सता रही होती है कि हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद कैसे बच्चा हमारा फाइनेंशियल अपनी चीजें मैनेज करेगा जब वो है। तो ये चिंता हम सब हो सकते हैं, तो उसमें है जी। सो मैं ये सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना चाहूंगी। सो आई वांट कि ये थोड़ा सा एक हमारा बातचीत की तरह बने, ना कि एक सेशन की तरह। सो अगर मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन करूंगी स्लाइड, आई विल शेयर अ प्रेजेंटेशन विद यू। तो आपको जैसे यहाँ पे भी पेरेंट्स हैं, जो भी मेंबर्स हमें ज्वाइन किए हैं, तो उनको जब भी कोई डाउट हो वो अपने आप को अनम्यूट करके दे कैन आस्क अ क्वेश्चन एंड वी कैन डिस्कस जो उनके माइंड में जो भी क्वेरीज आ रही हैं। जी। So, सबसे पहले बिफोर आई शेयर माई नॉलेज एंड व्यूज विद यू, आई वांट टू नो कि जब आपने ये सब सभी पेरेंट्स से या सभी मेंबर्स ने जो यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू फर्स्ट हर्ड ऑफ ट्रस्ट डीड और स्पेशली नीड्स ट्रस्ट डीड। तो आपके माइंड में पहला क्या आया, क्या क्वेरीज आई आपके माइंड में, और आपको क्या लगा कि ट्रस्ट होता क्या है? आप में से कोई भी अनम्यूट करके जो अपने व्यूज शेयर करना चाहें वो कर सकते हैं प्लीज। Hello, Shilpa. हाँ जी। Yeah, Sandhya here from Bangalore. जो ट्रस्ट का सुनते ही हमें लगा ये जरूरी है क्या? ओके, ट्रस्ट बनाना जरूरी है क्या? That's the basic बहुत सुंदर क्वेश्चन है answer. संध्या मैम, बहुत सुंदर क्वेश्चन। तो you can start with this. Yeah. So मैम, क्या होता है कि हम जब अपने बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हम यूजुअली या तो विल के थ्रू हम अपना एक पोर्शन रख देते हैं कि हमारे बाद बच्चों के पास ये जाएगा। पर सिंस हम पेरेंट्स हैं स्पेशल चाइल्ड्स के,
तो वो अपना उस फाइनेंशियल जो हम उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं वो उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उस चीज को इंश्योर करने के लिए ट्रस्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। सो बेसिकली ट्रस्ट क्या है कि एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपने कुछ अपना एसेट्स, कैश, मनी, जो भी आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं वो आपने साइड में रख के उसे जब तक आप हैं तब तक आप अपनी लाइफ टाइम में उसे ग्रो कर रहे हैं, उसे एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी में आपने कर दिया है, और उस ट्रस्ट डीड में आपने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन कर दिए हैं कि आपके बाद ये ट्रस्टीज रहेंगे, ये उस पैसा आपके बच्चे के मेडिकल, लिविंग एक्सपेंसेस के लिए ऐसे ऐसे वो डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, ऐसे ऐसे यूज होगा। सो ट्रस्ट के थ्रू इंश्योर हो जाता है कि जैसे अगर आपकी प्रेजेंस में जैसे बच्चे को फाइनेंशियली कोई कमी नहीं आ रही है, जैसे जैसे उसकी मेडिकल एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंसेस यूज हो रहा है, आपके बाद भी वो वैसे ही उसकी लाइफ टाइम तक यूज होता रहे। सो आप किसी थर्ड पार्टी को जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उनको आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि आप मेरी इच्छा के अनुसार आप उस पैसे को ऐसे ऐसे बच्चे की नीड्स पे उसकी लाइफ टाइम तक आप उस तक पहुंचाएंगे। सो इसलिए ये ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। जी शिल्पा जी, शिल्पा जी यहाँ पे एक और चीज जानना चाहेंगे। चलिए आपकी जो एक बार स्टार्ट करते हैं तो वहां पे जैसे जैसे चीजें आएंगी हम सवाल पूछते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो मैं कुछ ट्रस्ट के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी इसमें जी। कि बेसिकली ट्रस्ट क्या है कि सिंपल फॉर्म्स में अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस कि आप कैसे उसमें कॉर्पस को आप बिल्ड करेंगे, उसे ग्रो करेंगे और उस कॉर्पस को कैसे बच्चे के बेनिफिट के लिए यूज करना है। इसके द्वारा हम अपने फाइनेंसेस को जो हमने अपने बच्चे के लिए रख रखे हैं हम उसे बेटर मैनेज कर पाते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स एन इम्पोर्टेंट। तो बेसिकली आई एम शेयरिंग जस्ट अ प्रेजेंटेशन विद यू। यस मैम, आप कर सकती हैं। हाँ जी, तो इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो हमारी वरीज होती हैं यूजुअली हमारी एक्सटेंड करते हैं कि बच्चे हमारे बाद हमारे बच्चों पे कैसे मेडिकल प्लीज आप सब अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। सो हमारे बाद कैसे बच्चों के मेडिकल एक्सपेंसेस मीट होंगे, उनकी लाइफ टाइम एक्सपेंसेस, उनकी रेजिडेंशियल नीड्स कैसे कवर अप होंगी, तो बेसिकली हमारी चिंता यहीं तक रहती है जी। तो पेरेंट्स को एक सिस्टम बनाना पड़ता है कि जो बच्चे का बाद में ध्यान रखे, नॉट ओनली एज अ पेरेंट्स बट एज अ फाइनेंशियली भी उसका ध्यान रखे कि कब उसको रेजिडेंशियल नीड्स पे, अगर वो किसी रेजिडेंशियल सेटअप में रह रहा है तो वहाँ की फीस प्रॉपरली पे होती रहे, उसके एक्सपेंसेस, उसके मेडिकल बिल्स प्रॉपरली पे होते रहे, और उसके लिए जो हमने फंड्स हमने साइड में किया है वो इन्वेस्ट होके कहाँ कहाँ उसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सब एक ट्रस्ट डीड के थ्रू हम इंश्योर करते हैं जी। शिल्पा, आप अगर इसे हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स रखेंगे ना तो थोड़ा अच्छा रहेगा, हमारे कुछ पेरेंट्स जो हैं साउथ से। श्योर। Thank you. So we can say कि making a trust is a kind of financial planning. Yes. So it is a part of financial planning, like the way we invest in the equities, way we invest in FDs and banks. So trust is also a kind of financial planning. So any questions related to trust? कि अगर किसी को अभी भी trust का, if anyone is not able to understand trust, so they can come up with their queries. ट्रस्ट या ट्रस्ट डीड के बारे में अगर अभी कोई क्वेश्चन है स्टार्टिंग का ही तो आप अपना पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं शिल्पा, जैसे ही सवाल आएंगे तो हम ले लेंगे। So trust is like it's a legal instrument which is created under Indian Trust Act 1882, जो कि basically trust कई तरह के होते हैं। So today we are discussing about special need trust. So it is designed for the beneficiaries who are with disabilities, either physically or mentally, so they can enjoy the assets that is held in a trust for their benefit. Okay. So it is kind of mechanism so that your child is protected against any financial abuse. Okay. So during when you make a trust, either you slowly build up the corpus by contributing some funds, assets to it,
and which can you can also invest in it, and which can be utilized for his or her residential needs and other lifetime expenses. Okay. So that is basically the special need trust. Okay. I hope everyone is clear with what is trust and how it is. Now we will discuss how it benefits our child. So there आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, there is नहीं शिल्पा मैम, हम स्क्रीन नहीं देख पा रहे हैं, आपने अभी शेयर नहीं किया है. Oh, okay, okay. Just a second, please. Is screen not visible? मैंने आपको co-host राइट तो दे दिए हैं. हाँ, मैंने वही हम सोच रहे थे कि शिल्पा मैम शायद इसी तरह वो करना चाहती हैं. screen तो आप visible? अगर आप जी अब हम देख पा रहे हैं. थैंक यू. ओके, तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि अभी आई विल एक्सप्लेन कि कैसे जो ट्रस्ट डीड है कैसे हमारे बच्चों को बेनिफिट करेगी. सो हियर यू कैन सी देयर इज you form a trust and build a trust corpus. Suppose you build a trust with initial amount of rupees, you slowly build it, put money in it, assets in it. Then you can also invest it as per your desire where you want to invest it, and you can just build your corpus through interest. Wherever you invest, where you're getting the dividends, interest, whatever you build it, and you use it for your beneficiary of trust. So basically, what happens here is you have set aside some amount of money that is exclusively for your child's benefit, and you have put it separately in a trust. So you will be prompted to use it only for your child's benefit, not for any other your expenses. तो शिल्पा जी, ये जो अमाउंट हम उसमें रखते हैं ये कहीं इन्वेस्ट रहता है या फिर ये किसी सेविंग या करंट अकाउंट में ही रहता है? ये मतलब एक अकाउंट इन्वेस्ट, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इट, आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड यू वांट टू कीप इट इन आफ्टर यू फॉर्म अ ट्रस्ट, एक ट्रस्ट के नाम से एक बैंक अकाउंट खुलता है, आप उसमें मनी रख सकते हैं, उसका इंटरेस्ट आता रहेगा. यू वांट टू स्पेंड इट इन इक्विटीज, यू वांट टू स्पेंड इन म्यूचुअल फंड्स, जैसे हम ऑपरेट करते हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज द मनी विल बी इन द नेम ऑफ द ट्रस्ट. ओके. तो मैम ट्रस्ट और इंडिविजुअल में एक्चुअली कोई खास फर्क नहीं है. आप ये मान के चलिए कि इंस्टेड ऑफ बीइंग एन इंडिविजुअल यू बेसिकली क्रिएट अनदर एंटिटी फॉर योर चाइल्ड and that you have established as a trust which has some rules and regulations. So it now becomes a separate entity. You open a bank account in the name of trust. You basically invest the money in, let's say, mutual funds, stocks, or even if you purchase a property in name of the trust, that property or investment remains asset of a trust, and that will be used as you have defined in the trust deed. So trust deed is a mechanism or a document which defines how the money would come in, how it will be used, or how it will, let's say, grow or invested, and then how it will be eventually used for the benefit of the beneficiary who is your child. Okay. So it's just another entity as such. Yes, yes. तो basically हम अपने पैसे को इंटेलिजेंटली एक जगह स्मार्टली यूज कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और वही पैसा ये भी हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को बाद में मिलता रहे. हाँ, मैं एक एनालॉजी इसमें देता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल आपका अपना बैंक अकाउंट है, ट्रस्ट में और आप में कोई फर्क नहीं है. फर्क सिर्फ यहाँ पे इतना है कि सिंस आपका बेटा बीइंग अ स्पेशल चाइल्ड probably won't be able to take the right financial decisions. For example, they won't be able to know how to grow the money, how to invest the money, how to take it out. I mean, they would have some level of awareness, but they won't be able to do it completely independent like we all are able to do for our own money. Actually, so trust is just an instrument of using that money and for the purpose of benefit of that child or that beneficiary. So that's the only difference. Otherwise, trust में और as such किसी के अंदर भी कोई और फर्क नहीं है. मतलब if it is your own account versus if it is trust account, I mean they would earn the interest. The only thing is trust का अपना account, आप अपने human intelligence को use करके you pull out money, you do something for it, you spend it on yourself. Since your child won't be able to do or take all those decisions themselves, that things that you define in the trust which help trustees to use that money appropriately
It's also a binding legal framework in a way. So just think of that. So you are basically putting that intelligence on a piece of paper of how you want it to be done, rather than keeping it yourself and just using your jurisdiction. So that's is something that can be. Thank you, Piyush, to making it clear. Yes. Thank you. So let us, can you see my next slide? Yes, ma'am. So after your lifetime, so the after your lifetime, जो आपने whatever the corpus you have built, that will be distributed according to the instructions that you have left in the trust deed. So trustees will make sure that the money, whatever the instructions, rules, and responsibilities that you have mentioned in the trust deed, corpus is utilized as per your instructions. Okay. So in other words, you will be there even in your absence also. You can say that. Yes. So during your child's lifetime, trust will be used. What I will like to make it clear here is that the objective of the trust deed is very important. So objective of the trust deed should be clearly mentioned that it is for the benefit of your child. So one important benefit of trust forming is that all the corpus will be used only for the benefit of your child, not for any other benefit and not for any other purpose. That is clearly mentioned there. So that is one more like benefit that you derive from the trust deed. So after your child's lifetime, it will be terminated as per the instruction in trust deed. Suppose you have mentioned after my child's lifetime, it will be given to a charity or it will be distributed among the trustees. You can also define it will be distributed among the trustees in this percentage or in this way. So that way you can define. So after your child lifetime, the trust corpus is distributed as per your instructions. So that is the main, you can see, mechanism of trust that I have tried to explain in these two slides. How you build it first and how it is distributed after your lifetime. So any question by any of the parents up to this? If something is not clear. I have a question here. So basically, as you mentioned that the funds will be released as per the instructions given, right? So suppose, we are not there and we have probably assigned a guardian for the, for the, child. And if there is a need, say a medical need or say, whatever needs comes up, right? How do we ascertain that it is being used for the same? I mean, is there any documents required to substantiate the need at that point of hour? Yeah, so actually the document that you are mentioning here is the trust deed itself. So in trust deed, आप उसमें mention justify करेंगे कि अगर ये medical need ही है, suppose हम नहीं हैं, and we don't know whoever is taking care of the person then, right? वो किस intention के लिए पैसे withdraw कर रहा है, right? उस पे तो हमारा control नहीं रहेगा जब हम नहीं हैं. तो हम कैसे ensure करें कि ये जब हमें requirement है medical needs के लिए ही है and not for any other needs, right? How does that work? Yeah, so trust deed में क्या होता है? It's you appoint some trustees, the people you have some trust upon, they will carry out the responsibilities in your absence. So you also define कि किस medical conditions में, suppose कोई एक emergency medical conditions है या एक normal medical conditions है, कितना funds आप उसमें से draw कर सकते हैं. Emergency में आप इतना 50% draw कर सकते हैं या 50% आप उस corpus में से हमेशा रहेगा आगे की needs के लिए, लेकिन 50% आप emergency में draw कर सकते हैं. Secondly, you can also add the concept of protector. So protector is like you can appoint someone who will oversee the trustees and can have and whose consent is necessary in case of some very important decisions like medical conditions, like if you trustees want to change the residence of your child. So in these kind of important matters, acceptance or consent of protector is also required. So ma'am, I'll answer this question in a bit different way. So you are putting the onus of maintaining
financial needs and other needs for your child on some other people. And of course, you would be putting them on people you trust upon. So you definitely should have some trust on them. And that is where you are basically assigning the important role of trustees and other things. But in trust deed, you also can add as many safeguards as you want. But in general, I would suggest that we should not build too many checkpoints on that, which becomes, I mean, in trust deed, you can define that for every withdrawal, there needs to be, for example, there should be a documentary evidence for something. And then those accounts are always available for a scrutiny by certain functions. So you can define all of that. But it depends on how much you want to actually go to that extent, because sometimes you, in thinking of too many things, we overcomplicate for trustees as well. So there needs to be a fine balance in terms of the safeguards or checkpoints you want to define versus the ease of operations you want to define. And then I'm just trying to understand what would be a difference here, and what would be like, if I'm looking at saving something separately and utilizing that amount for the same cause, of course, right? What is the differentiator here between a personal saving and a trust? What benefits, or what what extra benefits does the special child get here out of it? Okay, so just think of it that way. You open up a FD in your child's account, and basically you are assigning his just one legal guardian, and it is all verbal communication to say, okay, I want this to be used like this, and then it's all the discretion of the legal guardian, and there is just one person responsible for it. So that is one way of looking at it when you are not forming a trust. Versus, let's say you form a trust, you, let's say, appoint 3 trustees. Let's say you appoint a role of a protector, you maybe appoint some other things, and you define a complete set of rules and guidelines of how this trust should be operated, how the corpus should be utilized. For example, just this medical emergency case. In trust, I can even go to an extent that even if it's an emergency medical case, just one trustee can withdraw, let's say, 20% of my movable corpus from this account by itself. That is a thing that you are documenting in the trust deed, and that is legally binding for the trustees to operate upon. Versus if you're just opening, let's say, a fixed deposit of, let's say, 50 lakh rupees, and there's a legal guardian appointed for it, it is all, I mean, of course, the legal guardian would also act for the benefit of the beneficiary, but there is no framework or guideline to basically put something restrictive on that or define how this money should be utilized, till what extent you can go to that. Let's say in my trust, I have defined that if my corpus goes beyond this particular level, at least leave, because I mean, the lifespan of the child would be big enough, let's say, after I'm not there. So I don't want to just deplete the complete trust in one go. So I would need to build some provision that how the trust should be depleted as such. And let's say if you have a asset in form of a property and all those things. So everything gets managed into one single entity, which is trust. Versus here, you would be putting a bunch of things in your child's name and then appointing some legal guardians. Let's say the legal guardian is not there. Let's say something happens to that legal guardian or the person wants to leave. Then he would assign some other legal guardian on that. Trust makes it very smooth to transfer that thing. And then there would be a set of trustees who would continue to work for the benefit of the child till your child is there and till the trust is not dissolved. So it streamlines a lot of stuff. And what is the kind of formalities, how much of time required? I mean, suppose we are not there, right, and we are transferring the guardianship. What all formalities are there? Is it too cumbersome? Is it something which is manageable? Because generally हमारे mind में वो conception होती ना, इतना झमेला कौन bear करेगा? इसमें कोई झमेला नहीं होता actually, but there is a bit of documentation that needs to be done, and that's pretty much it. And that depends on how much झमेला खत्म करने के लिए ज्यादा है. Sorry. Right. मुझे लगता है झमेला खत्म करने के लिए ज्यादा है. Exactly. झमेला आपका काफी सारा खत्म हो जाएगा इस ट्रस्ट को बना करके, instead of maintaining 5 different things in your child's name and then maintaining all of them separately. Trust के अंदर क्या है कि everything belongs to one entity, trust, and that trust is operated by a document called trust deed. और वो trust deed के अंदर आपको, for example, trustees change करने हैं. You define कि majority vote से हम trustees change कर सकते हैं. So for example, one trustee wants to resign. So it's a simple meeting call where people document their things. Okay, I want to resign from the trusteeship, and then some other trustee needs to be defined. Let's say you would also define protector, a safeguard checkpoint to say, okay, this person should also be consented for this. You complete some documentation and another trustee takes over. You want to change the signatory, you just call up a meeting and you say, okay, this is the signatory now for all the bank accounts. And then the single person would be able to operate everything.
if you want to say that instead of one person, I require at least two signatories for any withdrawal or something like that, you can just change that with the meeting and with the documentation. You can attach that with the trust thing, and everything is kind of comes together. So it actually takes care of a lot of hassles, so to say. Okay, one more question. I'm sorry, I'm taking a lot of your time. No, please. So, is it like, the trustees can be across pan India? Suppose, we all work in professional. There work is in one city nothing and restrictive on that. I'm sorry. So there is no restriction as such. I mean, I mean, my wife probably should be able to tell better, but I think if trustees are Indian, they should be able to be trustees as such. I don't know how the rules apply for, let's say, a person who kind of renounces their Indian citizenship. Let's say your sibling moves abroad and they kind of takes the citizenship of US or somewhere else. Then how they will act as a trustee, I honestly don't know the answer at this point of time, but our trust laws would definitely have that. And trusteeship would help define that. That trustee can actually resign and maybe assign some other trustee. So all those things can be easily taken care of. Okay. So Yeah, one question. It is always better to have people who are staying in India, because it is a legal entity that is formed under the Indian Trust Act. So, well, trustees can be of any age, so that doesn't matter. So they can, you have the full discretion, they have the full discretion. So the main important part is you should select the trustees very diligently. Whom you trust, they can carry out the responsibilities and they will act for the child's interest. So that is the main concern. And एक अच्छा मैकेनिज्म प्रोसीजरल है, बजाय कि एक लीगल गार्जियन के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ने का. सपोज लीगल गार्जियन सडनली उसे कुछ हो जाता है या उसे आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट होना पड़ जाता है, तब क्या होगा? यहाँ पे तीन लोग हैं, ट्रस्टीज हैं, उनमें से अगर कोई एक जाना चाहता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है कि हाँ, वो पहले इन्फॉर्म करता है कि मैं जाना चाहता हूँ, वो किसी उसकी प्लेस में कौन आएगा वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे प्राइवेट ट्रस्ट में सिर्फ क्लोज फैमिली मेंबर्स ही ट्रस्टी बन सकते हैं. So that is one of the advantage. Yeah, ma'am. I think Sandhya ma'am is trying to say something. See, the trust deed has to be registered, right? Yes. Number one, with the sub-register office. Right. And then when there is a resignation or the new trustee coming in, again we'll have to go to the registered office for the amendment. I don't think so, but I mean, probably we can. No, actually, you can, whatever the changes you are making in trust deed, that has to be registered. So what we do is, like, the updated copy of the trust deed should be with the registrar. That's why we get it registered with the registrar. So normally what we do कि आप कोई significant change बनाते हैं, suppose आपने trustees change करने हैं, एक दो चीजें और अमेंड करनी है आपने, तो हम उसे एक साथ अमेंड करके then we get it registered with the registrar. So main purpose क्या होता है रजिस्ट्रेशन का कि आपकी एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास भी रहे, ट्रस्ट डीड आपके पास है, उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास भी रहे, गवर्नमेंट के पास भी रहे, so that जिस पर्पस के लिए वो बनाया गया है वो यूटिलाइज हो सके. I had read somewhere, another small question, that these special private trust deeds, are they irrevocable? Yeah, they can be. They can be. So it is always advisable कि जब तक parents, grandparents, legal guardian या जो भी trust बना रहे हैं, जब तक वो हैं, वो revocable रहे, ताकि जब तक आप उसमें कुछ changes करना चाहते हैं, suppose trustees बदलना चाहते हैं या कुछ और भी changes करना चाहते हैं, तो आप उसे easily amend कर सकें. Because once again register them. Yeah, once it's become irrevocable, तो आप उसमें कुछ changes नहीं कर पाएंगे. कम कर पाएंगे, मतलब बहुत extremely rare conditions में आप changes कर पाएंगे. So that is the main difference between revocable and irrevocable. So irrevocable के अपने consequences होते हैं और अपने benefits होते हैं. जब तक आप उसमें कोई fixed asset move नहीं करते हैं, for example property या something like that. Yeah, I think that's a point. The other thing that you have to keep in mind from the taxation perspective, a revocable trust जो kind of settler है, जिसने वो trust बनाया है, वो उसकी income के साथ में add on करेगा. You would not get any tax benefits. But revocable trust is a separate entity from you. So revocable is kind of a part of you,
but irrevocable is something completely different. In fact, कल को आपके ऊपर let's say recovery आ जाती है for whatever reason XYZ, they cannot attach a irrevocable trust. But there are provisions where they can attach a revocable trust. So I mean, but in general, for example, for my case, I have made it revocable till my lifetime, and then once I am not there, it converts to irrevocable. That's how I describe the mechanism, so that it is easy for me in my lifetime. See, I may not be having corpus fund now to put it in a bank account. So what we as a family, we are planning is the income from an immovable property. I mean, the rental property could be the income of the trust. But what happens to the property? I mean, I have to define it in the trust deed, is it? So generally speaking, जैसे property मेरे नाम पे है, what I would typically do is I will define in my will that this property should be transferred. So whatever I want to give, let's say to my son with special needs, I would rather assign it to trust, because trust is the entity for him rather than giving him individually. And whatever I want to give it to my other son, who is a regular child, I'll just assign it to his name to say, okay, this part of my property, fixed assets or immovable assets, they go to my son, or for my other son, it goes to the trust. And then it becomes the property of the trust. And from that point onwards, the trustee definitions takes it over, and then it is managed appropriately. Okay. Thank you. Yes, आगे बढ़ते हैं शिल्पा मैम. हाँ जी, sure. So let me come to the next slide. So अभी हम ट्रस्ट डीड के बारे में जो उसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में we will discuss. So one of the main part is the author of the trust or the settler. They are also called settlers. So whoever wants to make a trust, either parents, grandparents, legal guardians. So it's totally author is writing the deed of the trust. The author, parents are defining the rules, responsibilities. So that's why they are called the author of the trust, or they are the settlers. So even the settlers can also be the trustee of the trust, but it is advisable that you have to define the future trustees also. So that once after you, who will be there to act as a trustee. So second part is trustee. So that is the most important part, like you have to determine who the trustee is. So basically the key point is you should appoint trustees who are younger in age to you, so that they can act as trustees, they can take the responsibilities after you. So you should appoint someone as trustees whom you trust, they will carry out the responsibilities in your absence as per your instructions, and they will think the major thing they will think is the benefit of the child. Like they will keep the child interest in mind while carrying out the responsibilities. So if you have someone in your family members, I think Sandhya ma'am want to ask something. Can you, because I have studied this part, so I have few questions to clarify. Can a minor under legal guardianship of her parents be a trustee named here in the trust deed? Yes, he can be a trustee. He can be a trustee. He can be named as trustee in the trust deed. The only difference is the power to take decisions as a trustee, he or she can exercise only after attaining majority. Majority, correct. Thanks. So whatever the powers that are in trust deed to take decisions for the child, that he can exercise only after attaining majority. So better रहता है कि you can appoint any family members, close family members as your trustee, because they understand the child, they are someone who can trust upon. But suppose if you don't have a close family member whom you can trust, you can also appoint professional organizations. So in India, there are few professional organizations that are working under this. There is a national trust also, so you can appoint. So the only difference between the trust deed in which family members are trustees or a professional organization are trustees is when a professional organization is there as a trustee, you put some strict rules and regulations. So to make sure
कि they don't abuse the finance and the objective of the trust deed is fulfilled. So trust deed is drafted accordingly. If you have a third professional organization, then we draft the trust deed. So one thing that we should all have in mind is trust deed is a very customized document. So it's not that the trust deed which I have made for my son, the trust deed which I will make for your son, it will be same. No, it depends on every child to child, every family circumstances. It is a very customized document. So the main objectives remain the same, but it is drafted, all the rules, regulations, use of trust, they are drafted as per the case-to-case basis. So it is a very customized document. So the third is beneficiary. So of course, beneficiary is the specially able child. Beneficiary can be of any age, minor, major, senior member. So any beneficiary जिसके लिए आप बनाना चाहें, beneficiary can be 1 or 2 or numbers of child. So it is depends on case to case. So next come is the trust corpus or the trust property. So an important part in making the trust deed is you have to estimate the fund that you have to keep aside. So like the fund should be enough that it covers the whole lifespan of the child. Like इतना funds होना चाहिए कि बच्चे के पूरे expenses, पूरी उसकी lifetime के expenses उसमें cover हो जाए. उसकी medical needs भी cover हो जाएं, उसकी living expenses, he can get the same standard of life जो उसे parents के होने पे मिल रहा है, तो he get the same. इतना funds enough होने चाहिए आपके पास कि तभी trust बनाने का फायदा होता है. जी बिल्कुल. Right? So आप उस फंड्स को डिटरमाइन करने के लिए वो सारे एक फाइनेंशियल टूल होता है कि आप कैसे कितना आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सपेंसेस क्या हैं, वो सब कौन से सिटी में रह रहा है, क्या है, वो सब चीजें यू डिटरमाइन एंड देन यू estimate that this amount of fund will be minimum required. So when you make a trust, the trustees might need the help of some professionals to manage the trust. Some professional fees should be going, so that all are deducted from the trust corpus. So trust corpus that you set aside also include these kind of fees apart from the expenses of the child. So that all we have to determine while determining the amount of the trust corpus. So and another important part of the trust deed is this objective. So in every kind of agreement or contract, we have to just make the objective of the किस objective से हम ये document बना रहे हैं वो बहुत अच्छे से clear होना चाहिए. Otherwise, the whole purpose of making a deed is defeated. So you have to specifically mention why you are making this for the benefit of your child, and this should be used for this only for the beneficiary of child for carrying out his expenses and not for any other purpose. So that has to be correctly and very specifically defined in a trust deed. So whenever you decide for making a trust deed, that you should have someone whom you can make trustees. You should have funds, you should have a beneficiary, and you should have an objective. These are the main and important part which constitute a trust deed. So any other questions with respect to this slide? Okay, so let's move to the drafting of trust deed. So drafting of trust deed is the first step in the formation of trust. बना रहे हैं उसमें आपको रूल्स रेगुलेशंस जो आपकी आप अपने बच्चे इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट. सो इट वैलिडेट्स whatever you have created, whatever the rules and regulations जो आपने बनाए हैं अपने responsibilities जो अपने बच्चे के बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए उसको एक लीगल बना देती है, उसे वैलिडेट कर देती है.
So it should always be drafted with the legal help. So future में उसके ऊपर कुछ conflicts ना आए. So that is the main purpose. And and it is, you can see that it is the foundation. Trust deed is a foundation on which the whole trust operates. How the trust will be operated, how the trust corpus will be built, how it will be distributed, that all is mentioned in the trust deed. So ये एक तरह से नींव है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट बना हुआ है, और how it will function वो सब ट्रस्ट डीड में ही मेंशन होता है. So trust deed should be drafted very carefully, and there are different type of trust: discretionary, non-discretionary, revocable. That all depends on the case to case basis. So whatever the conditions are, क्या purpose है उसका, कौन trustees है उसके base to base पे everything differs. So that is there. So basically आपके हम when we think of trust deed, so I would like to tell some of the important parts of the trust deed कि उसमें होता क्या actually. So first ये होता है कि आप objective define करते हैं कि मैं trust deed क्यों बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ. That is the main part. Then you define who the trustees are. Then you define what are the rights of the trustees, what the powers of the trustees are, what are their duties. तो trustees का power, duties define करते हैं. How the funds will be managed. Funds जो आपने अपने बच्चे के लिए निकाले हैं वो उसे आप कहाँ invest कर सकते हैं trustees. कुछ restrictions लगाने हैं आपको कि यहाँ मुझे नहीं invest करने हैं. Like you want कि वो corpus कहीं ऐसी risk taking activities में नहीं spend करने हैं. So you can put such kind of restrictions कि सिर्फ इस रेटिंग के इन्वेस्टमेंट्स में ही फंड्स इन्वेस्ट हों. शिल्पा जी आपकी आवाज फिर से क्रैक हो रही है. So that you can define how. Just give me a second. Yeah, is it better now? जी. Okay. Let me just off my video. I guess इसकी वजह से internet speed is getting affected. जी. So how the income will be distributed to the beneficiary, that we define here. So how the trust will be winded up, how it will be terminated, and or other parts are, you can also introduce the concept of protector, legal guardian, appointed guardian. You can also define key if how the trustees will when the role of trustees will come into part. Suppose you want to define key when till the time parents are alive, other trustees has no role. Their role will come into effect only on these conditions. So you can define this all there. So at the end of this presentation, I will also show you a sample of trust deed, जहाँ से you can get a better idea कि how it looks like. थोड़ा सा हमें फास्ट चलना होगा because हमारे पास समय Sure. So just let me show you this sample trust deed. So this is how it looks like. So first it is like you define the trustees, how number of trustees you can define. Then I have also introduced this concept of protector. So to take whose consent is necessary for the important decisions. So that whatever the parties are involved, you defined it there. Then you define the beneficiary. You give all the details of the beneficiary here. You define the object. What is the object of the trust is made. So that all you define. These are some of the definitions. This is totally a legal thing. So we define here what is the name of the trust. You can give it name like name of your child welfare trust. You can define it here. So you can also define the amount with which you are forming this trust. Property, you can explain what kind of property it should be included. You can define it all about the part of the trust. Whether it's revocable or irrevocable, or up to the lifetime of parents it is revocable, and after that it comes into irrevocable.
So you can give the guidelines to trustees ki if they want to appoint a custodian or investment professional, they can appoint. You give the power to the trustees. जी. So this is how a sample trust deed look like. So these are clauses that I have mentioned here. It's like they get customized according to case basis, as I have explained before also. Shilpa ji, here's a So question. this is just अगर जो ये ट्रस्ट डीड हम बनवाते हैं या ट्रस्ट बनवाते हैं, देन फिर उसे रजिस्टर कराना होता है, तो उसके लिए हम किसे कांटेक्ट करेंगे? अगर ट्रस्ट डीड के लिए किसी को कांटेक्ट कर रहे हैं, तो क्या वो ही हमको ट्रस्ट बनाने में हेल्प करेंगे एंड फिर वो रजिस्टर कराने में, या फिर हमें ट्रस्ट डीड किसी प्रोफेशनल से बनवा लेना है, देन फिर हमें आगे कहीं जाना है? ट्रस्ट डीड जो ड्राफ्ट होती है वो उसके लिए आपको लीगल हेल्प लॉयर्स के पास जाना पड़ेगा. Estate planners, corporate lawyers, they define the trust deed, they draft a trust deed. Usually जो trust deed register होती है वो उसी state में register होती है जहाँ पे आपने उसका office रखा है. तो like I have made a trust deed for my son, so I am staying in Noida, so it will be registered here in UP. So you have to go उस state के register office में ही आपको जाके register करवाना पड़ता है. तो यूजुअली देयर आर जो आपके लॉयर जिससे आप ट्रस्ट डीड ड्राफ्ट करवाएंगे वो आपको गाइड कर देंगे. दे कैन आल्सो हेल्प इट टू गेट यू रजिस्टर्ड, वो हेल्प भी करवा सकते हैं आपकी. एंड आप खुद भी जाके बल्कि रजिस्ट्रार के पास इसे रजिस्टर करवा सकते हैं. यानी कि हमें 2 लॉयर चाहिए होंगे, एक ट्रस्ट डीड के लिए एंड देन एक रजिस्टर कराने के लिए. रजिस्टर करवाने के लिए किसी लॉयर की जरूरत नहीं होती. So registration is a very simple process. It's a very simple process. In fact, generally it is recommended कि आप initial corpus जो है you just keep it very less, क्योंकि आपका initial जब registration करवाते हैं, so based on the initial corpus, for example, just put it 10,000 rupees. So the fees for registration would be close to like 2,000 rupees or something, and then there would be some extra overheads in the registrar office. So anyone who operates in sub-registrar office, they should be able to help you register that. It is just a matter of couple of thousand rupees and the person would be able to do that. The excellence comes in drafting this thing, because this needs to be accurate. जो हम registrar office में जा रहे हैं, it is more to do with putting a copy of this trust deed with registrar, along with, let's say, photo proofs, fingerprinting, all of that thing that typically happens in that. So there, whatever you are saying, you just kind of register it. That's it. It operates, it all comes into raised trust. Yeah, so registrar will not tell you कि आपने ये इसमें सही लिखा है या गलत लिखा है. वो तो आप जो उसके पास लिख के लेके जाएंगे वो उसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड में डालेगा. So you have to just carry your passport size photos and one ID card and one residential proof, and a trust deed is printed on a stamp paper, and you just go to the registrar and it gets registered. Okay. So either you can take the help of someone or you can do it on your own also. Okay. Yeah. So here, like it is defined ki how the trustees will be appointed. Of suppose if trustees how the resign, if some trustee want to resign, then what is the procedure, and how new trustees are appointed, that is all defined. Here you can see their power, rights and liabilities of trustees are defined. So I think in interest of time, we potentially can just stop sharing, and maybe if there are some other questions or other things, we can try to answer that. बिल्कुल पीयूष जी. तो पेरेंट्स, ट्रस्ट डीड एंड ट्रस्ट के बारे में आप कोई भी अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हैं. एंड अगर आप शिल्पा जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं ट्रस्ट डीड के लिए और किसी इंफॉर्मेशन के लिए, या उसमें आगे आप बनाना चाहते हैं, कुछ भी कहीं भी अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मैम आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? Yeah, you can just contact me on my mail ID and phone number. आप भी शेयर कर देंगे, चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए प्लीज. Yeah, I'm just displaying my presentation. उसमें ठीक है, इसके chat box पर डाल देते हैं. Okay, I'm just putting in chat box. जी. Thank you. Yes, parents, आप any other questions? Meanwhile, I just answer. Yes. अगर आपके जो भी सवाल हैं तो आप हाथ उठा के अपने सवाल पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके खुद को. Shilpa Agarwal at gmail.com, right? No, By it's mail. by mail.
Yahoo Mail or ymail.com. ymail.com. Yeah. अच्छा, okay. याहू बहुत कम लोग यूज करते हैं ना। Actually, it's a बहुत पुराना यूज होता था. You can also see कि my surname is Agarwal here. That is before marriage. बिल्कुल काफी पुराना आईडी है. आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं शिल्पा से, या ट्रस्ट डीड से रिलेटेड कोई भी। अच्छा, इसमें शिल्पा एक और चीज जानना चाहेंगे, इसमें सिर्फ फाइनेंशियल कोई हम वो कर सकते हैं जब हम ट्रस्ट बनाते हैं, ट्रस्ट डीड बनाते हैं, या फिर इसमें जैसे वो होता है ना फिल्मों में वो वसीयत के जैसा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, That तो is will. इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं। Trust deed and will are very separate thing. So trust deed के अंदर you define how it will be terminated. So in a way आप trust की will trust deed के अंदर define कर रहे हैं, but आपकी अपनी will जो है that is a separate document as such. Okay. You can basically, let's say, as I said, कि I have 2 kids. One is a child with special needs and other is a regular kid. Yeah. So what I'll do is in my will I'll define कि this portion of my property or fixed assets or anything should go into trust for my elder child, and then this portion goes to this particular child, and then this portion goes to my wife, and similarly my wife would have a will for her own. So trust kaise, so it is more like when I would be terminated, how my property should be distributed. Similarly in trust you define when trust would be terminated, how the trust properties would be terminated. So for example you can say, for example in my trust deed what I have defined is when the trust gets terminated, let's say because my son is no more or whatever, when the function of the trust is over, then the property of the trust or whatever assets are remaining with that trust at this point of time, they go to my younger son or someone else. So you kind of define that of what will happen to the remaining corpus. So ऐसा नहीं है कि वो अचानक से कहीं पे गायब हो जाएगा. After that you can define that. If for example your son or daughter happens to get married, you might still put up clauses कि उसके spouse को मिल जाए, इस तरीके से चला जाए. So you define how the trust property travels. So it is still your property, it is still your document, it is for the benefit of it, it is just a better management of financial corpus for your child. That is basically the sole purpose of it. Excuse me. जी बताएं. हाँ, ऑलरेडी आपने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर लिए हैं तो उसमें ट्रस्ट को ट्रांसफर कैसे करेंगे, उनको नॉमिनी बनाएंगे ट्रस्ट को? So ट्रस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं आप एज सच, जिस तरीके से बिल से आप ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो अपने लाइफ स्पैन के बाद में, या फिर आई थिंक हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अपना तरीका होता है किस तरीके से आप चीजों को ट्रांसफर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रियल एस्टेट या फिर इस टाइप की चीजें ट्रांसफर करते हैं, यू नीड टू गेट देम री रजिस्टर्ड. सो बेटर इज कि आप उनको रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह दोबारा क्यों पे करनी, उससे बेहतर ये है कि उसको बिल के थ्रू ट्रांसफर करिए. दैट विल हेल्प अस सेविंग सम ऑफ दोस अमाउंट्स इन दैट. Life insurance policy, for example, I'll give you my example. What I've done is I have a life insurance policy in my name, for which I was thinking of my son as a beneficiary. So instead of my son as a beneficiary, I would assign that policy to trust. So when the maturity of that life insurance policy happens, even in my lifetime or due to death, the funds for that life insurance policy would directly move to trust instead of coming individually. So there are different ways for different financial instruments how to get them transferred. I think a financial advisor or नहीं, विल के थ्रू करते हैं अगर, तो विल भी तो रजिस्टर होता है, तो वो भी बार बार री रजिस्टर करना पड़ेगा कुछ चेंजेस करते हैं तो. विल को आपको चेंजेस कराएंगे, इट शुड बी लास्ट रजिस्टर्ड विल एज सच, बट विल रजिस्ट्रेशन इज आल्सो अ वेरी सिंपल प्रोसेस. यू कैन गेट इट रजिस्टर्ड इन लाइक 1000. आराम से हो जाता है, लेकिन हाँ जितनी बार भी आप विल में चेंज करते हैं वो रजिस्टर कराना होता है. Ideally your last registered will is actually the copy. Yes. Because the bank told me that it is always good to register your will. Yes, it is definitely good. Yes. Okay. But I mean, आप एक बार सोच के इसको will बना लीजिए, and if you happen to make a change, that is a very simple process. You just register your new will and you say the old will is now no more. अगर ऐसा हुआ कि ट्रस्ट एक दूसरे स्टेट में बनी हुई है, but ultimate settlement of the child is in another state, तो पूरा का पूरा ट्रांसफर करना पड़ता है. So you are saying that trust is registered in a separate state, or trust का office एक state में है, and you have settlement maybe in another state. Okay. Then what happens? So I think कुछ state laws picture में आएंगे इसके अंदर बिल्कुल, जब वो चीजें होंगी, जैसे for example some states require probate of will or something like that.
But I think mostly, you know, it kind of works out if your beneficiaries of your will, they have a good relationship with themselves. I think when there is conflict, then of course there is a problem that happens. But otherwise, if they are in good terms, NOCs from each other kind of helps out and make it work. See, when there is a single child, all this help is required. When there is no sibling, when there is a sibling, there is a legal guardian already available. It is in case when the child is a single child. No, I don't think you should think of trust as a situation when you only have a single child. You should definitely create a trust if you have a special child, irrespective of whether they have a sibling or not. If you have a sibling, you should make them trustee so that they can take care of the financial corpus of your child. But if you don't have a sibling, then of course you have to find out other people who should be trustees on that. Okay. ओके, थैंक यू पीयूष जी। यहाँ पे एक चीज और हम पूछना चाहते हैं कि अगर ट्रस्ट में जितना अमाउंट हम फाइनेंशियल का जितना अमाउंट हम रख रहे हैं, तो क्या हमें उसको रजिस्टर कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा? नहीं, रजिस्ट्रेशन आप पहली बार करवाते हैं। अच्छा, अभी मैं कह रहा हूँ कि इनिशियल कॉर्पस जस्ट पुट इट 10,000 रुपीज सो दैट आपकी वो स्टैम्प ड्यूटी इनिशियली काफी कम जाए। After that, whatever corpus you keep, so trust जो आप रजिस्टर करवा रहे हैं ना, it is not the corpus of the trust that you are registering. Okay. You are registering that piece of document to say कि government has a true record of this trust deed, and now this is what it is. So उस टाइम पे जो corpus होगा उसके उस पे they will charge you stamp duty. So इसीलिए it is very advisable कि आप trust deed सिर्फ 10,000 रुपए से बनाइए, so that your stamp duty is very less. उसके अंदर कितना भी corpus ऐड करिए उसके अंदर, it doesn't matter. और अगर नया ट्रस्टी ऐड करें तो वापस से रजिस्टर कराना पड़ता है हर बार? हाँ जी, वो करवाना पड़ेगा, बट आई थिंक उस टाइम पे क्या प्रोविजंस होते हैं स्टैम्प ड्यूटी के? नहीं, स्टैम्प ड्यूटी उस पे नहीं लगती है। अगर आप ट्रस्टी चेंज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप 2-3 चेंजेस उसमें करना चाहें तब आप उसे एक साथ ही रजिस्टर करवा लें। और आफ्टर आवर लाइफ टाइम द ट्रस्टीज हैव द अथॉरिटी टू ऐड न्यू ट्रस्टीज? यस। ओके। So you can also define trust deed की trustees decide कर सकते हैं। You can also define कि जो new trustees आए वो suppose you can say close family member ही हो, तो आप इस तरह के restrictions डाल सकते हैं, but it is upon the discretion of the trustees. Madam, if a single child, how you can move? Sorry? Suppose if a single child only. अच्छा, if how to move? Okay. So I think you should, so trustees should be closer family members if possible. So maybe you might have siblings and their child, you can make them trustees if you trust them, if you have a good relationships with them. If you don't have a person that you can trust with the financial needs of it, then of course there are professional organizations whom you can appoint as a trustee for that. But of course they charge a lot of money from the corpus, and that thing would be an extra burden on that, and then you define it. But they are involved in day-to-day life also. Sorry? Professional trustees और day-to-day life में भी involve होते हैं decision making. अगर आपके उसमें कोई और trustee नहीं है तो you need to define trustees. So if you don't have, for example, your child siblings or let's say your siblings or anyone close family or friend whom you can actually trust as a trustee, then you need to define someone to act as a trustee, and that would be professional organization if you don't have it. So I would like to add here कि you can also define suppose your family member also as a trustee as well as a professional organization also. So suppose कि अब आगे चल के बच्चों की अपनी लाइफ होती है, तो suppose you want कि जो आपका उसका बच्चे का भाई या बहन है वो सिर्फ important decisions में ही ले और बाकी जो day to day life है वो professional organization manage करे. So you can keep a mix of both. You can keep only professional organization, but so you can only keep the family members, and you can keep only a professional organization. But advisable ये रहता है कि आप सिर्फ जब एक professional organization को रख रहे हैं तो उसके साथ एक close family member जरूर रखें as a co-trustee. शिल्पा जी जैसे ये कह रहे हैं कि अगर जो है सिंगल बच्चा है और तब मान लो फैमिली मेंबर्स नहीं है या फिर वो इतने क्लोज के नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि ट्रस्ट बनाना बच्चे के लिए डेंजरस हो जाए? मान लो हमने ट्रस्ट बनाया है, हम नहीं है और हमने ये क्लोज उसमें डाला है कि बच्चे के बाद ये जो है ट्रस्ट वहां जाके डिसॉल्व हो जाएगा, उनको मिल जाएगा या उनके इसको दूसरे तरीके से आप सोचिए, अगर कोई इतना क्लोज नहीं है जिसको आप ट्रस्टी बना पाए, तो आप कॉर्पस फिर किससे रखेंगे? आई मीन हु वुड एक्चुअली मैनेज दैट? सो ट्रस्ट
एटलीस्ट गिव यू दैट फ्रेमवर्क, क्योंकि उस टाइम पे ट्रस्ट बनाना इज इवन मोर एडवाइजेबल कि आपके पास में कोई भी नहीं है, एटलीस्ट देयर इज अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑन विच ट्रस्ट नीड्स टू बी गिवन। मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर कि अगर हमने ट्रस्ट बना दिया है और हमने उसमें ये क्लॉज डाला है कि जब हमारा बच्चा भी नहीं होगा तब ये फाइनेंसेस सारे इस ट्रस्ट को चले जाएंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन को चले जाएंगे, तो कहीं वो ये चीज हमारे बच्चे के लिए डेंजरस तो नहीं हो जाएगी? नहीं एक्चुअली डेंजरस इसलिए नहीं होगी क्योंकि फिर जो ट्रस्ट डीड है वो उसी हिसाब से ड्राफ्टेड होगी कि आप उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे। मतलब आप एक फैमिली मेंबर के हिसाब से करते हैं तो उसमें आप थोड़ा लीनियंट रखते हैं, आपको ट्रस्ट है उनपे। अगर एक टोटली सिर्फ एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही है तो आप उसमें उसी हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे, सारे पॉइंट्स को, लॉज को देखते हुए कि एटलीस्ट वो आपके बच्चे के लिए डेंजरस नहीं हो, एटलीस्ट अकॉर्डिंग लाइफ टाइम। और आप एक सूटेबल उसमें डिवाइजेबल रहता है कि आप एक सूटेबल उसमें से पार्ट एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी दें ताकि वो फाइनेंशियल अब्यूज नहीं करे। तो दूसरा will होगा ना, will will not be open to the trustees, और ये चीज will में कवर हो सकती है ना, इसको जाना है वो। जी हाँ, वो कह रही है कि ट्रस्टी को ये पता होता है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि ट्रस्टी को ये ना मालूम हो कि बच्चे के जाने के बाद फाइनेंसेस का क्या होने वाला है, वो कहाँ जाने वाले हैं, ये हम ट्रस्टी को ना बताएं। ट्रस्ट डिसॉल्व होने के बाद में यू नीड टू एक्चुअली डिफाइन कि इस ट्रस्ट जब भी डिसॉल्व होगा, फॉर सो ट्रस्ट कैन बी डिसॉल्व बाय टू रीजंस, वन थिंग इज टर्मिनेशन ऑफ द ट्रस्ट एंड अदर थिंग वुड बी आफ्टर द लाइफ स्पैन ऑफ द चाइल्ड। तो उस सिचुएशन के अंदर उस ट्रस्ट का डिसॉल्व होकर के उसका क्या होगा, देयर नीड्स टू बी समथिंग डॉक्यूमेंटेड फॉर दैट। हाँ, ये इसको ट्रस्टी वो पूछ रही है कि क्या इसको ट्रस्टी से छुपाया जा सकता है एज अ विल, वो विल में रखा जाए। आप ये लिख सकते हैं उसके अंदर कि ट्रस्ट डीड जो है वो फॉर एग्जांपल सेटलर की लास्ट रजिस्टर्ड विल के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ट्रस्ट का। आई मीन यू कैन डिफाइन ऑल ऑफ दैट। सवाल था। आप एक ऑर्गेनाइजेशन है कि इंडिविजुअल है, आप किस आप प्रोफेशनल हेल्प दे सकते हैं? जी मैम, सॉरी वो पूछ रहे हैं क्या आप उनकी प्रोफेशनल हेल्प कर सकते हैं ट्रस्ट डीड के लिए? अगर वो मतलब मैं नहीं कर सकता मैम, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरी वाइफ जरूर लॉयर है, वो शिल्पा सिंघल जी जो है मैम, ओप्पो से जो आप बोल रहे हैं, इन्होंने चैट बॉक्स में अपना नंबर एंड ईमेल आईडी शेयर किया हुआ है, आप वहां से नोट कर सकते हैं जो भी इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप ऑर्गेनाइजेशन हो हु कैन बी एडेड इन द ट्रस्ट और नो? नहीं मैम, नहीं, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं। Okay. So we have to find organizations who can manage the trust, but fortunately we had the family members whom we are making trustees in our thing. But if we require that kind of thing, maybe we can search. I mean, as a group, we have to search the professional organizations who can actually help us do that. We are definitely not that. हाँ, we are not the वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं कि ट्रस्ट डीड आप कैसे बनाएंगे। अच्छा, ट्रस्ट डीड बनाने में कितना खर्चा आ जाता है नॉर्मली शिल्पा मैम? मैम एक्चुअली डिपेंड अपॉन द केस टू केस। आजकल आप मार्केट में जाएंगे, देयर स्टेट प्लानर्स, so they charge approximately 1 lakh, around 1 lakh. So but my motive is like I want to help the parents, the children's, so I want to make it as a minimum possible rates. तो वैसे तो ट्रस्ट की जो डीड की ड्राफ्टिंग फीस और डिपेंड्स ऑन केस टू केस हाउ मच ऑफ माय टाइम इज टेकन। लाइक अगर मैं किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्टी है तो आई हैव टू ड्राफ्ट इट स्ट्रिक्टली, पुट मोर रिस्ट्रिक्शंस, हाउ मच टाइम आई हैव टू स्पेंड विद यू डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स, तो उस पर डिपेंड करता है। और फैमिली मेंबर्स के साथ हम थोड़ा उसे लीनियंट रखते हैं, या जैसे क्लाइंट्स चाहते हैं, जैसे वो चाहें तो वैसे हम बनाते हैं, तो वैसे डिपेंड करता है। बट अगर सबको सो इट डिपेंड्स, मतलब कोई बट आई कैन जस्ट गिव एन एवरेज आइडिया, डिपेंड्स अपॉन 25 to 30 के सब मिनिमम रेट्स। थैंक यू शिल्पा मैम। तो दोस्तों, ये ट्रस्ट डीड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हम शिल्पा जी को यहाँ पर लाके आपके लिए वो कर पाए हैं। देखते हैं इससे आपकी कितनी हेल्प होती है। अगर आप शिल्पा जी से इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे या ईमेल पर उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से यहाँ बताना चाहती हूँ कि डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया जो भी अपने गेस्ट को बुलाती है, उसमें उनसे आप जो कांटेक्ट कर रहे हैं या उनसे जो बात कर रहे हैं या उनसे जो
सर्विसेज ले रहे हैं, हम सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, हम उसमें बीच में कहीं भी नहीं होते हैं, ये हम बिल्कुल बता के चले आपको। तो ये आपके और उस गेस्ट के या फिर उस सर्विस प्रोवाइडर के बीच की बात होती है कि आप उनसे क्या सर्विस ले रहे हैं, क्या उनका है। लेकिन हाँ, ये इंफॉर्मेशन देने का काम और आपको अवेयर रखने का काम डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया करती है और करती रहेगी। अगले शनिवार हम फिर से मिलेंगे और मैं शिल्पा मैम का एंड पीयूष सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर, आप लोगों ने टाइम निकाला और सेशन के स्टार्ट से लेके एंड तक हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने ये सेशन शुरू से नहीं देखा है या वो कहीं शेयर करना चाहते हैं, तो YouTube पे हमारे डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया के पेज पर ये पूरा सेशन लाइव है, वहां से आप इसे बाद में भी देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। Sure. Just last thing before we wrap up. So trust मेरे हिसाब से हर किसी को सोचना चाहिए अपने लाइफ स्पैन में विद फॉर देयर स्पेशल चाइल्ड। बिल्कुल। So आप ट्रस्ट किसी से ही बनवाएं, कहीं भी करें, I mean we are just parents, so we happen to create a trust and that's where we are here to kind of put down our points. हम मार्केट में गए, हमने देखा, पता करा लोगों से, so that's where we are. If you require any further information or help to whatever extent, irrespective of trust बनवाएं, किसी से ही बनवाएं, feel free to reach out to us. Would be happy to help you out. थैंक यू शिल्पा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मतलब अगर आप ऐसे हमारे पेरेंट्स की हेल्प कर पाएंगे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पेरेंट्स, आप किसी भी ट्रस्ट से रिलेटेड बात के लिए या क्वेश्चन के लिए शिल्पा मैम को या पीयूष सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। और इस तरह की कोई वर्कशॉप या सेमिनार हमारी होगी तो हम आप आएंगे ना? हाँ बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का प्रोग्राम के लिए। और प्रोग्राम का जो है समय खत्म हो रहा है अभी, तो मैं एक बार फिर से आप सबको जो है धन्यवाद देती हूँ। एंड शिल्पा मैम, थैंक यू वेरी मच। संध्या मैम, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है आपके आज के सवाल जो है enlightening us, Parul and Agarwal couple. Shilpa, we will approach you whenever necessary. I made few notes which I'll be sharing with my husband and we'll discuss at home. बिल्कुल। और अगर आपको पूछना है तो उनसे आप पूछ सकते हैं। आपने अगर उनका नंबर ना लिया हो तो चैट बॉक्स से आप ले सकते हैं। I have. Sure. Thank you. ओके।